Assalamu alaikum. This is Tajil, a graduate in environmental sciences. Today, in this documentary, I will share my journey in CPTC, that is Climate Policy and Technology Center, a department working under the Environmental Protection and Climate Change Department of Punjab. Being a graduate of environmental sciences, I already had the theoretical knowledge of what environment and climate are. But one thing which I was lacking was the hand on practical experience, and this is where CPTC came in. The Climate Policy and Technology Center groomed me in ways I never thought I can. It provided me hand on practical knowledge on policy making and climate governance. Over here, I learned how to make the heat wave action plans. I learned how to make the monsoon management plans and many more policies. Moreover, I also understood how these government policies impact public and what is the public perception about this. This journey further helped me in producing my capstone project as well. When I first entered EPCCD, I thought research was simply collecting information and writing reports. Very quickly in CPTC, I realized that policy making is far more complex. Every recommendation must be supported by evidence. Every decision affects thousands or even millions of people. During my internship, I had the privilege of contributing to several important initiatives. I worked on Punjab Heat Wave Management Plan. I participated in environmental campaigns, looked through the AQI level. I learned how climate data is analyzed, how policies are written, how government departments coordinate, and how scientific evidence is translated into practical decisions. And this is what helped me to choose the topic for my capstone. It surely had to be something related with vehicular emissions in Lahore. Initially, I started reading about carbon taxation. Many countries impose carbon taxes to encourage people to reduce their emissions. The concept is simple: the more you pollute, the more you pay. This helps people to switch towards renewable energy sources, which includes hydropower, wind power, or it can be solar panels as well. But this cannot always be a solution. A carbon taxation might appear appealing, but it's not a permanent solution towards air pollution. One thing is that a carbon tax imposes a great financial burden on the people, especially in a country like Pakistan where the people are already living under poverty and additional tax can be a lot of discouraging. That's when I thought, what if people backlash towards an extra tax? I kept asking myself one question: would people respond better to rewards instead of penalties? Instead of introducing another tax, could we encourage cleaner behavior through incentives? That simple question gradually evolved into my research topic. Beyond carbon taxation, exploring positive carbon pricing for cleaner air in Lahore. Before starting, I need to understand the public perception towards climate taxes, and that's why I conducted a survey. Yes, exactly. That was the response. In only 2 to 3 days, I got more than 200 responses of people. Now, before starting it, I also need to know if there was any vehicular emission testing center set up in Lahore, and luckily there was. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने ये एमिशन टेस्टिंग सिस्टम स्टार्ट किया ताकि स्मोक को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि स्मोक में मेजर कंट्रीब्यूशन है वो व्हीकल्स का है। तो सबसे पहले हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो व्हीकल्स हैं हमारे पास गाड़ियाँ फर्स्ट फेज में हम लोग इनकी टेस्टिंग करें और इनके ऊपर ग्रीन स्टिकर लगाएं, तो कि जो कि इस बात को शो करता है कि जो हमारे पास गाड़ी है वो सर्टिफाइड है, EPA सर्टिफाइड है। आई थिंक ये जिस तरह से अभी इन्होंने एक गाड़ी के अंदर लगा दिया, इसके बाद क्या होगा? गाड़ी को रेस प्रेस करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास रीडिंग है वो इस एनालाइजर
डिस्प्लेजर पे शो होगी। हम लोग अपनी ऐप के अंदर इसका डाटा पुट करेंगे और जो बार कोड है स्टिकर पे, जो कोई भी पर्सन है जिसकी गाड़ी है वो इस बार कोड को स्कैन करेगा, अपने जो व्हीकल है उसका नंबर डालेगा तो अपनी एमिशन चेक कर सकता है। अच्छा, अब ये बता दें कि ये इसकी प्राइस क्या है? मतलब हर पाकिस्तान में कोई भी चीज़ हो रही है उसकी कोई ना कोई कीमत, कोई ना कोई फीस होती है, तो यहाँ पे इसकी क्या फीस है? 31 मई तक ये जो स्टिकर है फ्री है। 31 मई के बाद हम लोग चलान भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी प्राइस जो डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेगा। लाहौर के अंदर मैम ये आप कितनी जगहों पे आपने ये सेटअप लगाया? लाहौर में 7 to 8 डिफरेंट प्लेसेस हैं, जिसमें हमारे पास इंपोरियम है, पैकेजेस है, उसके बाद गजुमत है, लिबर्टी चौक है और लेक सिटी है। इसकी मैम थोड़ी सी टाइमिंग भी बता दें, क्योंकि लोग कहते हैं ऑफिस जाना होता है, ये है वो है, तो थोड़ी सी ज़्यादा टाइमिंग। मॉर्निंग में 7 से 12:30 तक और इवनिंग में 5 से 10:30 तक। Luckily, all the results which I got supported my thesis. Most of the people in Lahore were totally against an additional carbon tax, which is very much predictable in such an inflation rate. Secondly, most of the people wanted reliefs in taxes. People were willing to reduce their vehicular emissions if they get relief in taxes, and those taxes being the motorway toll tax and the annual car tax. Now, my idea was pretty simple. Instead of adding an additional tax, let's start giving incentives to people. Any car which is within the limits approved by the Environmental Protection Department of Vehicular Emission should get a reduction in their toll taxes. The system should be integrated with MTAG, and any car polluting less should be given an annual reduction in the tax. It can be depending upon the vehicular emissions and engine of the car. गाड़ियों की एमिशन टेस्टिंग करना ये कोई नई बात नहीं। बहुत से दीगर ममालिक में ये काम बहुत पहले से किया जा रहा है और पाकिस्तान ने इसे हाल ही में EPA के ज़रिए लॉन्च किया है। अब मसला ये है कि दीगर ममालिक में लोग अपनी गाड़ियों की एमिशन की बेसिस के ऊपर एक एनुअल कार्बन या एनवायरनमेंट टैक्स देते हैं, लेकिन ये टैक्स पाकिस्तान में इम्पोज करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। The reason is because Pakistan is already a developing country. Moreover, the people in Pakistan, they are already living under poverty line. इस सूरत हाल में अवाम के ऊपर एक और टैक्स का इजाफा करना सिर्फ और सिर्फ पब्लिक बैकलैश लेकर आएगा। इस सब सूरत हाल में मैंने सोचा क्यों ना कार्बन टैक्सेशन को एक पॉजिटिव वे में इम्प्लीमेंट करवाया जाए और इसका नाम पॉजिटिव कार्बन टैक्सेशन रखा जाए। इसमें क्या होगा कि EPA जो कि ऑलरेडी गाड़ियों की टेस्टिंग कर रहा है वो उसी तरह अपना काम जारी रखेगा और गाड़ियों को ग्रीन सर्टिफिकेट्स या फिर ग्रीन टैग्स देता रहेगा। लेकिन फ़र्क ये होगा कि वो गाड़ियाँ जिनकी वेहिकुलर एमिशंस कम हैं या फिर वो गाड़ियाँ विच आर विद इन द रीच ऑफ द परमिसिबल लिमिट्स प्रोवाइडेड बाय द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, उन गाड़ियों को थोड़ी सी रायत दी जाए। किस चीज़ में, ये हम आवाम से ही जानेंगे। जो सर्वे मैंने कंडक्ट किया उसमें मैंने लोगों से पूछा कि अगर उनको किसी तरह का टैक्स रिलीफ दिया जाए तो क्या वो अपनी वेहिकुलर एमिशंस कम करना चाहेंगे, जिस पर लोगों का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया एंड पीपल वर रियली विलिंग टू रिड्यूस देयर एमिशंस इफ़ दे गेट इंसेंटिव्स। और जो दो टॉप चीज़ें उन्होंने बताई वो था कि हमें एनुअल टोल टैक्स में कमी चाहिए यानी मोटरवे टैक्स में, एंड सेकेंडली अगर हमें जो गाड़ियों का एनुअल टैक्स होता है जो हर साल देना होता है उसके ऊपर या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फ़ी के ऊपर थोड़ी सी रियायत दे दी जाए तो हम अपने वेहिकुलर एमिशंस कम करने के लिए तैयार हैं। अब ये सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा मगर उतना नहीं है। EPA के पास ऑलरेडी वेहिकुलर एमिशन टेस्टिंग सिस्टम्स मौजूद हैं और वो उन पर काम भी कर रहा है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है कि हमने अपने EPA के डाटा को लिंक करना है MTAG के डाटा के साथ, और अगर जो भी गाड़ी रजिस्टर्ड होगी EPA की वेहिकुलर एमिशन टेस्टिंग में वो गाड़ी ही रजिस्टर्ड होगी MTAG के साथ, और जब भी वो मोटरवे का इस्तेमाल करेगी तो MTAG के डिस्प्ले के ऊपर नज़र आ जाएगा कि इस गाड़ी की एमिशंस कितनी हैं, और अगर वो एमिशंस जो हों वो रीचेबल है विद इन द परमिसिबल लिमिट सेट बाय द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, तो उस गाड़ी को उसकी बेसिस के ऊपर कोई 15 से 20% का एक टोल टैक्स में कमी कर दी जाए जो कि एनुअल हो और 1 साल के बाद रिन्यू सिर्फ उसी हाल में होगी जब गाड़ी दोबारा से अपनी एमिशन टेस्टिंग करवाएगी। और ये टेस्टिंग सिस्टम गाड़ी के इंजन यानी कि गाड़ी कितने सीसी की है, गाड़ी की उम्र वो कितनी पुरानी है और गाड़ी की रफ्तार कि वो कितना सफ़र तय कर चुकी है उसके ऊपर मबनी हो। इसी तरह कोई 1200 सीसी गाड़ी है तो उसकी एमिशंस कम और उस पर टैक्स भी कम, और जो गाड़ी थोड़ी बड़ी जो कि 18 सीसी या 2000 सीसी की है उसकी एमिशन ज़्यादा होंगी तो उसके ऊपर टैक्स भी कम कमी दी जाएगी। No meaningful research comes without challenges.
One of the biggest difficulty was the lack of existing research on reward-based carbon pricing, specifically in the transport sector. Most of the published data only focused on taxes and very little one explored incentives as well. Another challenge was balancing internship responsibilities with this capstone. There were deadlines, meetings, policy draftings, data analysis, literature reviews. There were days when progress felt slow, but I kept moving. Today, looking back, I realized this internship gave me much more than technical knowledge. It taught me how environmental policies are developed. Most importantly, I learned to believe in my own idea. This capstone began as a simple question. Today, it has become a complete research framework that I hope can contribute to cleaner air in Lahore. This project is my contribution towards that vision. I would like to sincerely thank my mentor, supervisors, colleagues, and the entire team at the CPTC for their continuous guidance, encouragement, and support throughout this journey. To my fellow interns, thank you for the collaboration, the discussion, and the memories we created together. And finally, thank you for taking the time to be part of my story. This may be the end of my capstone and my internship journey, but it is the only beginning of my journey as an environmental professional committed to building a cleaner, healthier, and more sustainable future. Thank you.